committee present here to the annual press conference being organized on the eve of 58th BSF Racing Day. Now I request DG BSF to address the media. Good afternoon, everybody. As part of the annual Racing Day, which BSF celebrates every year, we also have a responsibility to share with the media what all BSF has done in the last 1 year on the different aspects, whether it relates to operations, training, or any kind of outreach programs. So thank you very much for coming here at a changed time. The date was the same, but I think we had to change time because there's another meeting in MHA. And I know काफ़ी संख्या में आपके लोग भी गुजरात इलेक्शन में गए होंगे. And tomorrow is the polling, first is the polling. So I think as suggested by your colleagues, how I plan to go about is, I'll keep my briefing short, not too long. And after this briefing, आप लोग को जैसे भी one-to-one, if you want to raise any questions, any particular points, any clarification, वो उसके पश्चात we'll be getting to one-to-one. So BSF, आपको सभी को पता है, it's about 193 battalions strong. We have 3 main theatre commands. Western Command, which is the Pakistan border, it's about 2,300 kilometers, and we have the states जहाँ हमारा deployment है, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, and Gujarat. And on the eastern side, we have 6 commands, 6 frontiers, and these are the states of Bengal, Assam, Meghalaya, Mizoram, and Tripura. And this border is about 4,096 kilometers. We also have a substantial deployment of about 17 battalions in left-wing area. These are primarily in the states of Chhattisgarh and Orissa, and they've been deployed since the year 2010 in these areas, where they have done quite well, which we'll come to later. We have a very elaborate and a very well accomplished water wing. We are the only police or the paramilitary to have this kind of a water wing. This comprises of 18 floating border outposts. These are 38 meters by almost about 20 meters wide boats, जिसपे करीबन 30 से 40 आदमी 15 दिन तक पानी में रह सकते हैं. उनका राशन, पानी, they have sufficient amount of firepower also with them, with medium and heavy guns also. And each floating BOP is equipped with 4 speedboats, ताकि अगर कहीं भी कोई emergency है, so they can go and attend to that. We have a total of almost about 450 total different kinds of boats, which are deployed all over Eastern Command, Western Command. जैसे केवल यदि बांग्लादेश बॉर्डर की बात कर लें, तो we have almost about 900 kilometers of riverine border. रिवराइन बॉर्डर यानी जहां नदी या जो भी पानी का स्रोत है वो एक बॉर्डर बनाता है, और इसमें मिड स्ट्रीम इज टर्म टू बी द बॉर्डर बिटवीन. वी आर द ओनली फोर्स अगेन टू हैव एन एयर विंग विद अस. वी हैव अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अबाउट 22 planes and helicopters. We to service our far-flung areas in northeast, J&K, hilly areas, intractable terrain. Choppers हैं जो casualty evacuation के लिए, rations replenishment in winters उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. As far as the operations go, I think the last year has been fairly good. On the operational front, we have achieved quite substantially. As far as the seizures go on the arms and ammunition, they have been better than way before.
as far as seizures on yaba tablets, जो methamphetamines है जो म्यांमार के रूट से आती है और नॉर्थ ईस्ट इससे काफ़ी ग्रसित है, ये जो ड्रग प्रॉब्लम है उसमें वी हैव सीज्ड रिकॉर्ड नंबर ऑफ याबा टैबलेट्स आल्सो, बट यस अभी भी आती हैं, अपने चोरी छिपे बिल्कुल आती हैं. उसी तरह फेंसिडिल syrup which is smuggled into Bangladesh as a substitute for alcohol, उसमें भी seizures have been very good since the last 1 year. I would definitely like to state here that on the Bangladesh border and the Pakistan border, आपको पता है दोनों बिल्कुल ही भिन्न प्रकार के बॉर्डर हैं. बांग्लादेश relatively friendly border जिसमें बहुत ज़्यादा countries डिस्टेबलाइजेशन या आर्म्स वेपन्स की स्मगलिंग इतनी तो नहीं होती है, बट हाँ छोटी मोटी स्मगलिंग सारी है, कपड़ा है, बीड़ी है, सिगरेट है, मछली है, और इन सब की स्मगलिंग रेगुलर होती रहती है जहाँ भी मौका मिलता है. और इन्फिल्ट्रेशन इज एन इशू. यू नो द नंबर ऑफ बांग्लादेशीज हु आर ऑलरेडी देयर इन इंडिया. जो गरीब तबके का है वो छुट्टी पे बिना कागजात के अपना ही ट्राइज टू क्रॉस द बॉर्डर, एंड जब पकड़ा जाता है तो यस ही हैज टू अंडरगो द लीगल प्रोसेस ऑल्सो. Apart from that also there are almost about 10,000 people जो बांग्लादेश बॉर्डर से अलग अलग स्टेट से विद वीज़ा रोज आते या जाते हैं, 10,000 लोग. सो एंड this is the maximum number of visas that we issue to any country in 1 year. So on that front also I think things have been good. The amount of lethal power which we were using in the last couple of years has drastically gone down. हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉन लीथल हथियार की कोशिश करते हैं. हालांकि उसका एक फ्लिप साइड ये है कि उनको भी पता है कि बीएसएफ यदि नॉन लीथल ज़्यादा इस्तेमाल करेगी जिससे मरने का खतरा नहीं है, तो देयर आर मेनी अ टाइम व्हेन दे आल्सो ट्राई टू टेक लिबर्टी विद आवर फोर्स. कभी हथियार छीनने का प्रयास करते हैं, कभी ओवर पावर करने का प्रयास करते हैं. इट इज़ देन व्हेन द लीथल पावर इज यूज्ड. The amount of non-lethal weapons we have got now extra sanction from the Ministry of Home Affairs ताकि हम और ज़्यादा non-lethal weapons इस eastern border पे इस्तेमाल करें. We have tried to increase in a very very big way the amount of surveillance that needs to be carried out on the western and the eastern front by the deployment of all kinds of cameras, day, night, PTZ, handheld thermal images और even drones. And इन सबको एक सूत्र में पिरोते हुए we have tried to formulate low cost technology solutions. पहले हम लोग कुछ विदेशी कंपनियों से हमने कुछ कराया था, वो काफ़ी महंगा था, but our own BSF boys and officers who guided the people in the field, and इस तरह से हमने काफ़ी लो कॉस्ट में टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं, जिसमें कि on the border level we combine all these cameras, surveillance devices, drones, other sensors into one, और फिर हम उसको through wireless, which means without a wire, through radio and other means उसको पीछे battalion level, frontier level तक उसको transmit करते हैं. And these are very low cost. अपने गृह मंत्री महोदय और गृह सचिव महोदय दोनों ने जाके खुद देखा और उसको सराहा कि यदि इतनी कम कीमत में हम कर सकते हैं तो they also supported us. And this year itself we have got almost about 30 crores for this, and we'll be installing almost about 5,500 cameras only this year extra. So this will be very useful as far as surveillance is concerned. And we were employing drones also in a very big way to have day and night surveillance on any kind of infiltration or any kind of other nefarious designs what these people may have. We are improving our defenses also in the J&K area, jahan Home Ministry has sanctioned almost about 117 FTLs ke liye, which are like border posts, new kind of structures, and we are reinforcing them so that they are better than before. On the technology front, I think we have done, we are doing quite a bit on the anti-drone front. We have deployed systems on the borders also, which have been very effective and very useful. We are testing out new technology also to detect these drones which are coming in more and more efficiently. And by combining with some of the state police, हमने कुछ extra deployment भी किया है, क्योंकि आप समझते सकते हैं कि जब भी ड्रोन से कोई भी सामान, हथियार, ड्रग्स वगैरह कोई भी भेजेगा
तो अल्टीमेटली उसको कलेक्ट किसी न किसी व्यक्ति को अवश्य करना पड़ेगा, और कलेक्ट करने के लिए उसको बॉर्डर के आसपास कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा. To counter that, we have tied up with the state police, and almost about, in one particular state, we have got 300 people from the state who are doing depth patrolling. यही चीज़ जब हमने क्रिमिनल्स को जिनको पकड़ा और उनके इंटरोगेशन से भी आई कि साहब आपकी फोर्स तो आगे बॉर्डर के पास रहती है, लिहाजा हमने और थोड़ा डेप्थ में मंगा करके और ड्रग्स को अपने कब्जे में लिया था. सो वी आर डूइंग दैट. वी आर ऑल्सो trying to have a surprise element by keeping these forces at different places. We have also provided very good, I can tell you, incentives to our forces to bring down these drones. आप समझ सकते हैं कि अंधेरी रात में, और जैसा हमने पाया है कि लगभग 2, 3, 4 बजे ये ड्रोन्स आते हैं, अंधेरी रात में बिल्कुल घुप अंधेरे में ड्रोन की मात्र आवाज़ सुन के और उसको बंदूक से निशाना बनाना, इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आप देख सकते हैं जब लोग टारगेट में भी चलाते हैं तो बुल्सआई तो कभी कभार ही लगता है. और तो बट वी हैव प्रोवाइडेड सम वेरी गुड इंसेंटिव्स टू आवर फोर्स पीपल, एंड एज अ रिजल्ट दिस ईयर इटसेल्फ 16 ड्रोन्स हमारे लड़कों ने मार के गिराए हैं. पिछले पूरे साल में 2021 में मात्र 1 ड्रोन गिराया गया था. एंड नाउ वी हैव ऑल्सो ट्राइड टू परफेक्ट किस तरह से ड्रोन गिराना है, कब गिराना है, कितनी आवाज़, कितने रिस्पॉन्स टाइम में क्या कर सकते हैं. सो इट विल बी यूजफुल. एंड परसों एक रात में 2 ड्रोन गिराए गए, जिसमें एक ड्रोन को तो 2 हमारी जो महिला प्रहरी थे उन्होंने मार के गिराया, के नाम कांस्टेबल प्रीति एंड कांस्टेबल वन मोर लेडी कांस्टेबल, जिन्होंने फायरिंग करके और ड्रोन्स को. दिस इज द फर्स्ट टाइम आवर लेडीज हैव आल्सो ब्रॉट डाउन drones from the sky. Photographs will be shared with you by the PRO, वो आपको दिखा देंगे. उसी तरह we are also trying to do something, जैसे आप सभी के पास मोबाइल है, यदि आपका मोबाइल में ले लूं तो मुझको पता चल जाता है आपने किसको फ़ोन किया, कब बात की, क्या मैसेज किया, कहाँ गए थे, क्या, सब चीज़ पता चल जाती है. इसी तरह की चिप ड्रोन्स में भी होती है. तो वी आर ट्राइंग टू एनालाइज, जितने भी ड्रोन हम गिरा रहे हैं उसकी चिप को एनालाइज करके वी आर एबल टू गेट, आई एम नॉट सेइंग वी विल गेट, वी आर एबल टू गेट उनके क्या फ्लाइट पाथ होगा, कहाँ से आया, कहाँ गया, कितने बजे फ्लाइट पाथ पे शुरू किया, कितने बजे समाप्त किया. ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल. जैसे आपके फ़ोन में उपलब्ध रहती है वैसे ही उसमें भी उपलब्ध रहती है. इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हाउ वी आर एबल टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन. आवर information and technology department has been able to tie up with some private university and उस तरह से करके, and we are able to get wonderful information from these drones which we have brought down as a result of it. पंजाब पुलिस से मसलन एक केस की यदि बात करें तो एक में हमने जो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट उनको दी उस पर 8 आदमी गिरफ्तार हुए, जिसमें 6 व्यक्ति NDPS यानी नारकोटिक्स एंड ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत कन्विक्टेड लोग थे. यानी कि पूरा ट्रायल होने के पश्चात 6 व्यक्ति कन्विक्ट हो चुके थे और ये व्यक्ति एक बार पुनः वही ड्रग्स की स्मगलिंग में लगे हुए थे. सो विद दैट काइंड ऑफ प्रिसाइज evidence, electronic evidence available, we are helping the states, and this is the first of its kind that we have opened this kind of forensics in the drone, and I think this will be very useful in times to come. We have launched a lot of e-initiatives also in keeping with what technology is available, जिससे काम और ज़्यादा सरल हो सकता है, सुगम हो सकता है, and in a more transparent manner, and to bring in more accountability in the people also. We have launched e-office in a big way. शुरू हो चुका था. We have launched it in a big way. Most of the files are now coming on e-office. We have also launched e-sparrow, यानी कि हमारे अब जितने भी ऑफिसर्स हैं सबकी, और इस साल से शुरू हो जाएगा नॉन गेस्टेड के लिए भी, सबकी ACR अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही लिखी जाएगी, ताकि उसको टाइम बाउंड है, यदि आपने नहीं लिखी तो उस टिप्पणी के साथ आगे चली जाएगी उस नियत तारीख को कि आपने इस पे नहीं लिखी. अन्यथा पहले क्या होता था, कभी गायब हो जाती थी, कभी डिले हो जाता था, उसके प्रमोशन में इफेक्ट पड़ जाता था. आई थिंक ऑल दैट विल बी टेकन केयर ऑफ विद दिस काइंड ऑफ अ थिंग. In the e-learning management system also, we have put in a lot of information about training. We have made absolutely top-class 3D films about how, for example,
X95 कैसे चलती है, बरेटा कैसे चलती है, LMG कैसे चलती है, एंड वी आर शेयरिंग इट विद आवर एंटायर ट्रेनिंग स्टाफ. लास्ट ईयर लगभग 14,000 रिक्रूट पास आउट किए थे, और अभी दिसंबर के अंत में या जनवरी फर्स्ट वीक में अपॉइंटमेंट लेटर्स आपने सुना ही होगा 22 तारीख को इशू हुए थे. लगभग 7,500 नए रिक्रूट्स आएंगे, और इस तरह की चीज़ जो कि एक बार क्लास में दिखाई गई उसके बाद आप उससे अनभिज्ञ हो जाते हैं, और ये आपको बार बार जैसे ही ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप स्वयं देखें, सीखें, आई थिंक इट विल बी ग्रेट हेल्प टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो. वी हैड अबाउट 11 मैनुअल्स, BSF के भी मैनुअल्स होते हैं जिससे सारी कार्य प्रणाली की जाती है. दीज आर फॉर ट्रेनिंग, फॉर ऑपरेशंस, मेडिकल, एयर विंग, सबके अलग अलग है. We have updated all these manuals till the year 2022 with all the government rules, all the government circulars. Some of them had not been updated for almost 30 years, but now we have all manuals updated till the year 2022. Some of our institutes, National Training Center for Dogs है, बहुत अच्छा है. It's an institute for excellence, and right now we are promoting the Indian dogs, the Mudhol Hound, Rampur Hound, Rajapalyan. और कश्मीर आप लोग जो भी गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा बकरवालों के पास एक गद्दी कुत्ता होता है जो उस ठंडी इलाके में बड़े आराम से रहता है, एंड इट डज द गार्डिंग. सो वी आर ट्राइंग आउट दोज डॉग्स ऑल्सो. इनफैक्ट अभी जो प्रधानमंत्री महोदय केवड़िया में गए थे 31 अक्टूबर को, उनके सामने केवल इंडियन डॉग्स का शो रखा गया था, एंड ही रियली अप्रिशिएटेड कि इस तरह से इंडियन डॉग्स को यदि प्रमोट किया जाए. And I can also share with you, our experts who are dealing with this National Center for Dogs have said, जो गलती करने की एक परसेंटेज है इंडियन डॉग्स में बहुत कम पाई गई है. यदि हम 50 बार एक कुत्ते को वही चीज़ सिखा के ट्रेन कर रहे हैं, तो इंडियन डॉग्स may be committing mistake maybe once out of 50 times, but these foreign breeds would be committing mistake 3-4 times. I mean, I'm not saying anything, but I'm just saying facts. They are they learn very fast. We also have a Senvosto, Central Weapon Stores, जहाँ हम हर प्रकार के हथियार की रिपेयरिंग करते हैं, टीयर गैस गन के पार्ट्स बनाते हैं. We'll be starting using 3D printers in those places also, so that machine के parts या जो parts आसानी से ख़राब हो जाते हैं और हम vendors पे निर्भर रहते हैं, that also we can repair with absolute accuracy and in a time bound manner in these Senvosto. टीयर स्मोक यूनिट जो हमारा है एकमात्र पूरे भारत में जो टीयर स्मोक म्यूनिशंस बनाता है, और सभी स्टेटों को और पुलिस को देता है, और आसपास की जो कंट्रीज हैं वहाँ भी देता है. उसने भी कई प्रकार के नए म्यूनिशंस बनाए हैं टीयर स्मोक के, और एक लेटेस्ट जो उन्होंने डेवलप किया है ड्रोन से टीयर गैस के शेल्स ड्रॉप करना. तो 6 शेल्स होंगे, और चाहें तो आप एक एक करके सीधे क्राउड के ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं, और चाहें तो एक साथ भी सारे टीयर गैस शेल्स ड्रॉप कर सकते हैं. ऐसे फेंकने में या टीयर गैस गन से द एक्यूरेसी इज वेरी लो, कहीं गिरता है कहीं नहीं गिरता है, और इससे इट विल बी मोर एक्यूरेट. दिस इज व्हाट दे हैव डेवलप्ड. इसी तरह वी आल्सो हैव अ इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड एडवेंचर ट्रेनिंग, जहां कनोइंग, माउंटेनरिंग, रेपेलिंग and paragliding, all these things are taught. So we've been teaching IPS officers, we've been teaching different police organizations, different CAPFs, and it's we are also submitting a proposal to make it an institute for excellence, that also. In the outreach program for BSF, एक धारणा normally और काफ़ी लोगों में है कि जो बॉर्डर की रक्षा करता है वो केवल आर्मी है. So we tried to create an outreach program so that people at least know there's a wonderful organization, 2,65,000 strong BSF which exists. And अभी latest Teachers Day था 5 सितंबर को, तो हमने 2 सितंबर को we sent our representatives in जिसमें 2 व्यक्ति और 2 महिलाएं थी, 2 BSF के officers, 2 महिलाएं. They went to almost about 3,000 schools and contacted about 3 lakh children. कि BSF क्या होती है, किस प्रकार का रोल रहा है 1971 में, what did they do, and what all we are capable of doing, and how by acting the eyes and ears at the borders you can help, make BSF more strong and protect our countries even better. So that outreach program was done. Apart from that, we have done a number of motorcycle rallies, cycle rallies, in which जो हमारे BSF के दिव्यांगजन थे,
who somebody had lost a leg, somebody had lost a foot, somebody didn't have was handicapped. इनके केवल इन्हीं लोगों के यहाँ से we send them to Atari on motorcycle and then they came back stopping at villages to give the people the feeling कि यदि दिव्यांग जन भी इस तरह का काम कर सकते हैं तो I think anybody or at least most of you can do what you want to do. So that kind of outreach program. We are also making a very interesting museum at Petrapol. Petrapol is on the border of India and Bangladesh because 50 साल बांग्लादेश को भी इंडिपेंडेंस के हो चुके हैं. So you know the contribution of India in the creation of Bangladesh जो भी रहा हो शायद लोगों को इतना ना याद हो, तो इसलिए उसी की पिक्चर्स वीडियो एंड ऑल विल बी पुटिंग अप देयर सो दैट पेट्रापोल से निकल के जहाँ से रोज कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग आते और जाते हैं, they can at least see what kind of museum it is and what the India-Bangladesh friendship stood for. इसी तरह we are making another outreach program at Tannod. Tannod is in जैसलमेर. जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर एक मंदिर है जहाँ पे माना जाता है कि 1971 की लड़ाई में जितने भी बम गिरे, मंदिर के आसपास जो भी बम गिरे वो एक भी नहीं फूटा और आसपास जो गिरे वो फूटा. मान्यता अच्छी है और आज भी लगभग 1-1.5 हज़ार लोग वहाँ जाते हैं. वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन अस सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी. जिसमें विल बी मेकिंग, जैसे हमारे गृह मंत्री महोदय का एक सीमा दर्शन प्रोजेक्ट है, विल बी मेकिंग समथिंग लाइक दैट. वेपन्स का म्यूजियम होगा, यात्रियों के लिए फैसिलिटीज होंगी, देयर विल बी थिंग्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले अराउंड और engage themselves, and then there will be different videos and films going on which will tell them about what border is. Medical mein we have done some good work. We have started this concept of telemedicine. Our doctors here, they can tell you more about it, and on 2 days a week कहीं भी दूर दरस्त इलाके से कोई भी व्यक्ति जो किसी भी बीमारी से परेशानी से ग्रसित है वो कांटेक्ट कर सकता है थ्रू टेलीमेडिसिन टू अ स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस एंड ही कैन गेट द कंसल्टेशन डन. दिस इज लाइव ऑन वीडियो. दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वी हैव स्टार्टेड इन विच इफ यू प्लेस वन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऑन द पेशेंट, उसके जितने भी वाइटल पैरामीटर्स हैं, वेदर इट्स बीपी, वेदर इट्स हार्ट रेट, वेदर इट्स पल्स, व्हाटएवर, दीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ फोन to another specialist on a different location. तो जहाँ बैंडविड्थ कम है, वीडियो नहीं जा सकता है, वहाँ हम इसका इस्तेमाल we've already started, ताकि रिमोट मॉनिटरिंग से डॉक्टर इन अ स्पेशलिस्ट प्लेस कैन एटलीस्ट टेल यू कि किस प्रकार की परेशानी है. यदि ये ईसीजी आ रहा है, ये इसका बीपी, ये पल्स, ये दूसरे इंडिकेटर्स हैं, आई थिंक ही नीड स्पेशल अटेंशन, या नहीं इट इज नॉर्मल एंड कोई इतनी दिक्कत नहीं. सो वेयर देयर इज अ गुड बैंडविड्थ वी हैव प्रोवाइडेड टेलीमेडिसिन फैसिलिटी, एंड वेयर देयर इज लो बैंडविड्थ मॉनिटरिंग ऑफ पैरामीटर्स थ्रू दिस फोन से ट्रांसमिट किए जाते हैं. वी हैव आल्सो employed boat ambulance in Sundarban's area and in Malkangiri also, ताकि दूर दराज के इलाके और गांव जहां कोई भी मेडिकल व्यवस्था नहीं पहुंच पाती है, किस तरह के कई गांव भी हैं, वहां आप बोट्स कैन गो एंड प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस टू पर्सन, या कोई यदि अस्पताल भी आना चाहता है तो बोट्स कैन ब्रिंग हिम टू द हॉस्पिटल ऑल्सो. We have also employed drones in 4 different places to transmit life-saving drugs or medicines to a remote location which is there up there in the higher altitude. So, वो life-saving drug, medicine or anything can be immediately sent there and उससे relief ताकि पहुंच सके. In training, we have started a number of e-classrooms so that one good instructor at one place can teach a number of people in different places, whether it is our academy in Tekanpur or in Indore or in different STCs all over the country. We have started telling them about the usage of drones, how drones work, what are all their capabilities, what are the dangers provided by drones. We are teaching them how to use 3D printers. किस तरह से आप वेपन के पार्ट्स को या अन्य चीज़ों को बनाने के लिए, या कोई क्रिमिनल भी किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है to subvert our surveillance systems. We had about 14,000 recruits last year and another 7,500 coming. So by different training methods, e-learning management systems and very good 3D models, I think we'll be giving good training to them. We have a UN contingent also, जो इस साल भी गया है, और this year it went on the 4th of May 2022, about
137 people have gone, in which there are 127 male members and 10 female members. They have done excellent work, and in fact, in the excellent work that was done, I can share with you, two people lost their lives. And why I am telling excellent work is because when the station was attacked by ultras, our people told all the other foreign members of the UN to go away, especially the ladies and others, कि आप लोग जाइए और हम संभाल लेंगे करके. Those people were able to escape, and our people, 2 people got martyred in the process. This was on the 26th of July this year. In fact, UN is also conferring a medal on them, and so have we recommended for their gallantry act also. In the welfare part, we have tried to do quite a few things. Some important ones are, we saw that a number of, आपको पता है, e-learning systems बहुत सारे हो गए हैं आजकल, whether it is Byju's or Akash or whatever system. So we tied up with Byju's, and we got access on 10,000 logins for our children, कि 8वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के जो भी छात्र हैं और उनका जो भी लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है Byju's में, तो Byju's will be able to give us free. So 10,000 children have already benefited by having access to these learning systems of Byju's. We have tried to provide as many scholarships to our children as possible. In the past years, couple of scholarships were not utilized. We have made sure almost all scholarships जो भी available हैं MHA level पे हमारे try to utilize them. We have also tried to rationalize our welfare funds. कई किस्म के होते हैं, तो वर्तमान में केवल welfare fund में हम लोगों से पैसे लेते थे और उनकी आवश्यकता अनुसार कभी कभार उनको देते थे, अन्य कारणों, बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी के बच्चों की शादी के लिए. नाउ वी हैव मेड इट मोर लिबरल कि यदि फंड्स हमारे पास उपलब्ध हैं तो उसको कार लोन के लिए, उसको हाउस बिल्डिंग लोन के लिए और उसको कंप्यूटर्स खरीदने के लिए भी वी विल बी प्रोवाइडिंग more and more loans to our people in the force, so that they can become more computer savvy घर बनाने में. And we have tried to see to it that market rate से जो भी होगा उससे कुछ 2% कम पे हम उनको लोन दिलाएंगे, ताकि उससे भी उसका welfare एक issue होगा. We have also tied up with IRCTC for easy, very easy. Earlier, we had a paper warrant जिसमें कागज भरिए, वहाँ register करिए और उसको करके then you were given that concession. Now we are tied up with IRCTC so that even on the e-platform you can get your rail and air tickets booked, whether on duty or on anything else. So that has also become very useful. Well, the challenges before the force today are many. The main ones being drone is a challenge for which we do not have a very foolproof anti-drone system. But we are developing. I think some of the Indian companies have provided some very good solutions. We are there, almost there, and I think in times to come we'll be able to find out better solutions for that also. उससे भी एक बड़ी चीज़ है, I think with the spread of computers and with the spread of more and more connectivity, and with 5G also coming in, I think cyber security will be a very, very big thing. And अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से एम्स में भी ransomware की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं. So we need to protect all our systems जो भी हैं, चाहे office work के हों या sensitive information के हों. We need to see to it that we protect our cyber security even better in the times to come. There are other issues also, whether these are related to welfare, there are timely promotions and also, which also we are attending to regularly at our level also. As far as the women's empowerment goes, this year I think will be the first time you will see on the BSF Camel contingent in the Republic Day Parade, half the contingent will be women this time. And they'll be coming there for the first time. And we are also trying to have something more, but that we'll be able to share with you only in the times to come. We are trying to get our women into one place and a very, very big platform where there is not even a single lady till date. So we'll see, and we are trying, and I think we'll be able to succeed, and you'll see that sometime in January, that women are there on a platform where not even one exists even after 75 years as on date. So with this, I think the briefing is by and large
overview I have given to you. This year we'll be having a 58th Raising Day at Amritsar. And from the last year's experience, having done the Raising Day at Jaisalmer, I think people definitely appreciated, and the people of Rajasthan in particular, where it was held. I can share it with you for the last 10-15 days when we were even doing the rehearsal there. I think it was absolutely jam-packed. For them it was an eye-opener that BSF is a force which has an air wing, which has a water wing, and it is such a huge force. And a number of battalions from even Rajasthan were raised when first BSF was raised on the 1st December 1965. तो लोगों का association तो अभी भी था, but I think they were very pleased to have this kind of a parade in a remote place as Jaisalmer. So this time also, Amritsar, I think we'll be able to put up a very good show. And for the first time, we are amongst anywhere in the police in the entire country or CAPF, we are trying to do a skydiving show by the BSF. They'll be coming down from the skies on parachutes and land in the stadium there. And they've been practicing for almost about 2 months there. So this will be a first novelty that you will see on the Raising Day at Amritsar. We'll try to put up a very good show at Atari also on the 3rd, which is the day before. 3rd evening को करेंगे. आप में से कुछ लोग यदि अटारी ना गए हों तो अवश्य जाएं. I think it's a wonderful show that you must see. वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाला शो है, and it fills you with a lot of patriotism, feeling of nationalism, nationalistic fervor. अच्छा लगने वाली feeling है. So thank you very much, and from my side this will be all, and I think now we can go for आप 1-to-1 यदि चाहें तो आप पूछ सकते हैं. Unless until you want to ask questions specifically, then I'm available. You can ask these questions in 1-to-1 also if you want. Hi sir, I just wanted to ask you. Hello. Yeah. Sir, recently during his visit at Kishanganj, HM talked about demographic changes at border. Have you found any changes at Indo-Bangladesh border? Are there any changes? Have you reported to the government? We don't have any statistics to that effect. We do not, and I think with the latest census that is going around, that will be able to give you a clearer picture. Okay, thank you. Sir, this question regarding to the infiltration in Jammu and Kashmir. Now BSF says that the IB is completely sanitized. We are not allowing any terrorists to get in. The army has also made similar claims when it comes to the LC part of it. But we have seen that the foreign terrorists in the Kashmir Valley have increased. So where are these foreign terrorists coming from, and why are these numbers increasing? You see, it's very obvious that whether it's army or BSF, देखिए जहाँ तक हमारा होगा, we will not let them in अगर कहीं भी दिखाई देता है करता है. उनका भी प्रयास ये रहता है कि चोरी छिपे कहीं से कैसे भी करके घुस जाओ. It's possible. They may be. I will definitely not say that it's absolutely foolproof and BSF के किसी भी जगह से एक भी व्यक्ति नहीं घुसा. It's possible. But we will make a. You see, the entire the distance between, for example, 2 patrols is a certain distance. It may be about 300 meters, it may be about 400 meters, it can be pitch dark, and you can very well understand, यदि आप पंजाब वगैरह में चले जाएं तो इस समय सर्दियों के टाइम जो धुंध रहती है, maybe you can't even see beyond 5 meters. So it's possible, but जहाँ तक हमारा प्रयास रहता है कि we'll certainly not let them in if it comes to our knowledge, whether as part of intelligence or as part of surveillance, we'll definitely not let them in at all. So my question is related to the drone seizure. As you said, there were 16 cases where they were shot down, and you're trying to study the flight path and the origin of the drone. So if you can share your findings, if you found something, where have they originated from? And secondly, which country are they made? Are they Chinese, or are they from some other countries? My second question is related to, sir, last year Home Ministry has granted you
powers to conduct search and seizure in border areas of certain states. So what have been your experience? It has been over more than 1 year. If the numbers have gone up, if they have come down, what are your findings, if you can share them? Thank you. Two things. First, the drone related, and next, the infiltration related. Regarding drone, I can only tell you this much, that we are getting wonderful information. Like I told you, if I take your phone, I get all information. If I take a drone and if it's not too damaged, yes, I am able to get phenomenal information. किस समय उड़ा, कहाँ से उड़ा, किधर गया, किधर रुका, कहाँ से आया, कितनी बार गया. We are able to get everything. And on the basis of that, because ultimately the investigation and the registration of case has to be done by state police, so they are the ones who are registering the case and we are helping them out. On that front, I can tell you only this much. But I can tell you, you can draw a simile between your phone and the information from a drone. So that is the kind of information available. Two, yours was regarding 50 kilometers. That's correct. If you would have seen, last year also I told you very categorically that the change from 15 to 50 has been with respect to two notifications only. One, Passport Act, which is जब भारत से आप बाहर जाएं और कोई कागज आपके पास पूरा नहीं हो तब. And the other is Passport Entry into India Act. When Entry into India Act obviously means जब आप बाहर से आ रहे हैं और आपके पास पूरे कागजात नहीं है. Only with respect to these two acts, total 3, दोनों मिला के, total 3 sections have only been changed from 15 to 50. And as you can very well understand, Passport Act and Passport Entry into India Act relates only to illegal infiltration. Yes, we have been quite successful. The numbers have gone up slightly, not too much, slightly. And wherever we are doing it, whether it's Bengal or Assam or Tripura, I mean, we have got very good coordination and cooperation also from the state police, and we have been registering cases. Yeah. सर, ड्रोन्स का वेट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो 2 गिराए गए उनमें से एक 18 किलो का था, एक 24 किलो का था. तो क्या हार्ड किल करना ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि बड़ा आकार है LMG के सहारे, और जो सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी अभी तक आप लोग प्रोटोटाइप में यूज कर रहे हैं वो कहीं सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, मैं तो कहूंगा कि जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है, उतना बड़ा टारगेट बनता है. और जितना बड़ा टारगेट बनेगा, जैसा आपने खुद कहा कि हार्ड किल के लिए आसान पड़ जाता है और सॉफ्ट किल तो काम कर ही रहा है. मतलब ठीक है, इट वर्क्स, एंड इफ इट वर्क्स देन यू हैव एडेड. अब एक की जगह 2 बहुत छोटे, देखिए, एंड जितना भी बड़ा ड्रोन होगा, दीज आर ऑल कस्टम मेड, यानी कि फैब्रिकेट करके कोई व्यक्ति बना रहा है. एंड जैसा आपने कहा ना, चाइनीज ड्रोन वगैरह फोटोग्राफी में और अन्य चीजों में, दे आर बाय एंड लार्ज वेरी स्मॉल वंस, दे वेरी स्मॉल वंस बट वेरी वर्सेटाइल, वेरी गुड. And in fact, one of the companies जो अपने नेबर की है, that owns almost about 60 to 70% share in the entire world. तो उनके ड्रोन से very versatile, but जितना छोटा होगा पेलोड उतना छोटा जाएगा. But they would be more interested in, like you are saying, the 2 that we shot down were bigger drones. तो हाँ, बड़ा होगा तो हमारे लिए और आसान है, it will be good for us. और not single, but if you fire a burst shot लगातार तो कोई एक नहीं तो लगेगा. I think it is good for us if they go for big drones. Thank you very much. Thank you.
उससे निपटने के लिए किस तरीके से आप लोग कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ड्रोन वास्तव में एक चैलेंज है। उससे निपटने के लिए हमने कई स्तर पे अपने प्रयास किए हैं। सर्वप्रथम तो हमने कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम्स बॉर्डर पे लगाए हैं और ये भी काफ़ी इफेक्टिव काम कर रहे हैं। पर जैसा आपको विदित है कि बॉर्डर काफ़ी बड़ा है और इसमें चप्पे पर हर स्थान पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाना वर्तमान में संभव नहीं है। शनय अंश लगा पाएंगे।